Hello everyone and welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about one of the most crucial stages in DMAT process, that is the improve phase. So this is the phase wherein we turn our attention to the implementation of the process improvements and work towards fulfilling the project objective. So हम करते क्या हैं बेसिकली हमने जो अभी तक का इंसाइट्स एंड डेटा एक्वायर किया है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेजेस जैसे कि डीमैक है सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्प्रूव फेज सो हमने जो भी डेटा और इंसाइट्स कलेक्ट की थी डिफाइन मेजर एंड एनालाइज फेज से right we are going to go ahead and initiate the enhancement of the identified problematic process, right? So we will go ahead and develop new and creative solutions while taking into consideration the business constraints and the customer requirements. So the primary goal is to achieve measurable and sustainable improvement in the process. So this is a major goal that we have in this one, right? So in this stage, we aim to eliminate the root cause of the problems we discussed, right, in the analyze phase, जहाँ पे हमने root cause को identify किया था. So improve phase में we're going to go ahead and eliminate that root cause that is identified. So improvement stage जो है, improve phase, सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. So brainstorming basically we go ahead and sit together, cross-functional teams, right, and brainstorm on the potential solutions to the identified problem areas. And this leads to identifying new opportunities for optimization or ways to eliminate the problem completely. So brainstorming is an important step in the improve phase. Now, moving on, the second one is pilot testing. Pilot testing क्या है? I'll give you a hypothetical example. So I have a process wherein 1,000 workers are working, and the processes go like this: A to B to C, and then output, and here is the input. So मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग से एक सोल्यूशन निकाला है. उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में सोल्यूशन में A टू C टू B होगा, यहाँ इनपुट होगा, यहाँ मेरा आउटपुट होगा. Rather than involving all the 1,000 people in this new process, I'll just go ahead and involve, say, 10 people first. And this is very a small scale implementation of the improvement plan, right? And why is it done? This is done to check the effectiveness and the possible impact on the larger process. अगर मैं पूरे 1,000 वर्कर्स पे ये प्रोसेस इंप्लीमेंट कर दूंगा, हो सकता है कि मेरा प्रोसेस पूरा गलत हो जाए. तो इसलिए 10 वर्कर्स पे किया ताकि आई गो हेड एंड चेक कि ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा. एंड दिस इज डन इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. इसको हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बोलते हैं या कंट्रोल्ड वे भी बोलते हैं कई जगह पे, बट इट्स नॉर्मली कॉल्ड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. एंड दिस इज डन to lessen the potential issues during the implementation phase. Okay, so this is pilot testing. Moving on, then we go ahead and plan the implementation. So after the testing is done on the pilot solution, we develop the implementation plan. We must access and minimize any risk or impacts on other aspects of the business or processes. So हमने पायलट प्रोसेस में जो भी स्टडी किया, अगर किसी बिजनेस प्रोसेस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, so we go ahead and minimize it.
So this is what is done in the implementation phase. इसके बाद क्या आएगा? इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दी है, इसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी चाहिए हमें. अब कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है? सो अब जब इम्प्लीमेंट कर लिया प्रोसेस, वी डिवाइस अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग फीडबैक एंड सजेशंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड टीम मेंबर्स एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स फ्रॉम द फीडबैक. सो मैंने जब इम्प्लीमेंट किया ए टू सी टू बी rather than moving from A to B to C, ये मैंने इम्प्लीमेंट नया प्रोसेस कर दिया. इसमें से मेरे 10 वर्कर्स ने बोला कि अगर हम A से एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस करें D, फिर C, फिर B, so process is more efficient. So we go ahead and do it. And this is continuous improvement that we are going to do. And this will ensure that all improvements are truly sustainable and the process continually evolves with the changing needs. Efficiency बढ़ेगी मेरे process की. Hence we require continuous improvement. Moving on, इसके बाद हम standardization करते हैं. What is standardization now? So standardization, once we have successfully completed or implemented the new change, it is important for us to standardize it across the entire process. So we go ahead and create a detailed and documented process and relevant policies and procedures so that there is consistency and stabilized results. So basically, what we are going to do is we are going to create SOPs, standard operating procedures. हमने जो भी implement करा है उसको हम SOP में document कर देंगे so that everybody can go ahead and look at it. And this has to be a very detailed document कि मैंने process में क्या changes किए हैं और इन changes के साथ मेरे क्या क्या चीज़ों में effect पड़ रहा है. So this was all about the improve phase in DMAC methodology. And with this, we come to an end to this video. I hope you learned more about the improve phase. So thank you so much for watching. Please subscribe to my channel and have a great day.